Hello friends, so कैसे हैं आप लोग? Hope all of you are doing well. In today's session we are going to discuss a very interesting poem by John Donne, Valediction Forbidding Mourning. तो ये एक मेटाफिजिकल पोएम है गाइस. इसका आज हम लोग टोटल ब्रेकडाउन करेंगे. We'll discuss it entirely line by line. The entire analysis and the summary will be discussed today in today's session. But before we do that, a couple of announcements from IGNO. जो कि एक्चुअली गुड न्यूज़ है फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू ए हार्ड टाइम रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स एंड ऑल्सो फिलिंग अप द फॉर्म्स. तो पहला जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज रिगार्डिंग द फिलिंग अप ऑफ फॉर्म फिलअप. That is the link which was activated without fine and it was extended already till 30th of April. अब उसको extend करके 15th of May कर दिया गया है. आप लोग 15th of May तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं without any late fine. So that is actually a good news because during this crisis lot of people are facing a hard time filling up the forms in due time. तो पहला न्यूज़ जो है वो रिगार्डिंग द फॉर्म फिलअप है गाइस एंड सेकेंड न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स. तो द रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स देयर इज़ वन मोर गुड न्यूज़ दैट द टाइम पीरियड फॉर सबमिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 month अगेन. सो आप लोग अभी 31 मई तक असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो. दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ बट वी विल रिकमेंड कि आप लोग जल्दी सबमिट कर दीजिए या तैयार रखिए अपना असाइनमेंट सो दैट ये जो मई का महीना है आप यू कैन स्पेंड while preparing for the exams. ठीक है. So in this session we are also going to discuss a question which was asked from June 2019 term and examination. And before we do that, let us discuss a little bit about the background of the poem. So A Valediction Forbidding Mourning is a metaphysical poem by John Donne, written in 1611 or 1612 for his wife Anne, before he left on a continental Europe trip. A Valediction is a 36-line poem that was first published in 1633 collection Songs and Sonnets, 2 years after Donne's death. Based on the theme of two lovers about to part for an extended time, the poem is notable for its use of conceits and ingenious allegories. ठीक है. तो ये पोएम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज़ अ मेटाफिजिकल पोएम गाइस. इससे पहले भी हम लोग ने 2-3 मेटाफिजिकल पोएम्स हमने हमारे सेशन में कवर कर चुके हैं. A Valediction Forbidding Mourning by John Donne is basically a poem of 9 stanzas. हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं और ये जो पोएम है इट फॉलोज द A B राइम स्कीम. नाउ जिन्होंने मेरा सेशन पहले भी अटेंड किया है दे ऑलरेडी नो व्हाट डज अ राइम स्कीम मीन, और जिन्होंने अभी तक नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि द A B राइम स्कीम मीन्स दैट फॉर एवरी 4 लाइन्स द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन विल राइम with each other and the second and fourth lines will also rhyme with each other. There are many different types of rhymes that occur within lines. तो हम लोग इस बात को पकड़ के चलेंगे कि जो पहले और तीसरा लाइन है वो एक साथ राइम करते हैं. डजेंट मैटर कि आखिरी वर्ड ही राइम करे. तो इस रेफरेंस में हम लोग पहला पैराग्राफ उठा के देख लेते हैं वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग का. तो पहला पैराग्राफ जो है says as virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go, while some of their sad friends do say the breath goes now and some say no. तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे पहला लाइन जो है द वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड तीसरा लाइन जो है while some of their sad friends do say, it rhymes in a certain way. अब आखिरी वर्ड भी अगर उठा के देख लोगे तो it rhymes. Okay. And similarly the second line goes and whisper to their souls to go, and the fourth line the breath goes now and some say no. तो ये दो लाइन्स भी राइम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो द पैटर्न इज बिन फॉलोड इन द एंटायर पोएम, so you have to keep in your mind, and this also happens to be a very vital point which you can write in your answers, that the entire poem follows A B rhyme scheme. Now we know that the British poetry जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉब्लम बेसिकली ये नहीं है कि आप लोगों को पूरा समरी एक्सप्लेन करना है पोएम में. इट इज़ बेसिकली टू अंडरस्टैंड दैट आरटीसी के जो क्वेश्चंस है रेफरेंस टू जो कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस है वो कौन से पोएम से उठाए गए हैं. तो इस रेफरेंस में मैं पहले से सजेस्ट करता आया हूँ कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रीड द एंटायर पोएम बिफोर यू गो टू द समरी और एनालिसिस पार्ट. एंड आई ऑल्सो रेकमेंड इन दिस सेशन कि आप लोग इस पोएम को इस सेशन के बाद फिर से अपने से एक बार पढ़ के देखिए ताकि यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द एंटायर पोएम सिस्टमैटिकली. So let us now try to understand line by line what does the poem
means a valediction forbidding mourning by John Donne. So the first paragraph goes something like this: as virtuous man pass mildly away. Virtuous का मतलब होता है guys the people who are having high moral standards, and mildly का मतलब होता है in a gentle manner. तो जब नेक लोग दे एक्सपायर, जब गुजर जाते हैं तो ऐसे जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता, बहुत ही शांति से चले जाते हैं. और दूसरा लाइन जो आप देखोगे, एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, वो अपने जो आत्मा है उसको जस्ट विस्पर करते हैं कि अभी उनका समय हो गया है जाने का. एंड दे लीव द एंटायर वर्ल्ड, द फिजिकल वर्ल्ड, वो छोड़ के चले जाते हैं इन अ वेरी सॉफ्ट एंड माइल्ड मैनर. वाइल्स्ट सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम से नो. तो उनके जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, जो वर्चुअस लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं, वो नहीं चाहते कि दे गो सो अर्ली, और कुछ लोग तो ऐसा भी चाहते हैं कि दे डोंट गो एट ऑल. तो इससे हम लोग ये रेफर कर सकते हैं कि या समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जो नेक लोग हैं, जो वर्चुअस लोग हैं, दे go and they leave the world without making any noise, and their friends, their sad friends, are not willing to give them up, and some are also saying that they should not leave at all. So moving to the second paragraph, which says, so let us melt and make no noise, no tears floods, nor sigh tempests move, twere profanation of our joys to tell the laity our love. This paragraph में हम लोग देख सकते हैं कि ऑथर कैसे मतलब अपना जो रिलेशनशिप है और अपना जो स्पिरिचुअल लव है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. ही इज़ ट्राइंग टू कंपेयर एंड कनेक्ट इट विद द फर्स्ट पैराग्राफ गाइस, जो मैंने अभी कुछ सेकंड पहले एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पे ऑथर जो है जॉन डॉन अपने वाइफ को ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको भी इस तरह से पिघल जाना है जैसे कि वर्चुअस लोग शांति से चले जाते हैं इस दुनिया को, बिना किसी हल्ला किए, बिना किसी को परेशान किए. हम लोग को भी ऐसे पिघल जाना चाहिए और कोई भी आवाज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी नॉइस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि जॉन डॉन वॉज गोइंग फॉर ए trip, okay, for a continental Europe trip. So he was leaving his wife behind, so he was trying to console her in a way. तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी आंसू नहीं बहाना है उनको और कोई भी आहे भी नहीं भरना है. तो ट्वायर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयस का मतलब है, ट्वायर का मतलब है इट वेयर, और प्रोफेनेशन का मतलब है मॉकरी. तो वो बोल रहे हैं कि अपना जो प्यार है, जो स्पिरिचुअल प्यार है, तो ही इज़ ट्राइंग टू एलिवेट द लव ऑफ हिज इन ए स्पिरिचुअल वे एंड लाइक एलिवेटेड कंपेयर टू अदर्स, एंड सेइंग कि मतलब उनका जो प्यार है टुवर्ड्स हिज वाइफ इज़ हायर देन द फिजिकल नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, टू टेल द लाइटी आवर लव, लाइटी का मतलब है ऑर्डिनरी पीपल. तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा हाय हल्ला करके जब ऑथर जा रहे हैं, वो अपना जो प्यार है वो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते. ठीक है. Moving to the third paragraph, which says something like this: moving of the earth brings harms and fears. तो यहाँ पे हम लोग इस लाइन को बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. बेसिकली द ऑथर इज ट्राइंग टू से अबाउट द अर्थक्वेक हियर. सो व्हेन द अर्थ मूव्स, जब भी भूमि हिलती है तब क्या होता है? इट ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, डर लाता है अपने साथ, बहुत ज़्यादा नुकसान लाता है. मैन रेकन व्हाट इट डिड एंड मेंट. रेकन का मतलब होता है एस्टैब्लिश बाय कैलकुलेशन. लोग ये अनुमान लगाते हैं, ये गणना करते हैं कि ये अपने साथ, ये जो अर्थक्वेक अपने साथ क्या ला रहा है, क्या नुकसान ला रहा है अपने साथ, एंड इसका मतलब क्या है. ठीक है. बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्पीयर्स, ट्रेपिडेशन का मतलब होता है गाइस ए फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन. स्पीयर्स का रेफरेंस यहाँ पे प्लैनेट्स को लिया गया है, प्लैनेट्स को समझाया गया है. दो ग्रेटर फार इज इनोसेंट. ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लैनेट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू द अर्थक्वेक दैट इज़ हैपनिंग इन आवर मॉर्टल वर्ल्ड. लेकिन वो कितने इनोसेंट है, लाइक देयर सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ इज़ लाइक सो सबलाइम. मतलब कितना शांति से हैं वो लोग, कितने इनोसेंट हैं. तो यहाँ पे ऑथर अपना सोलर सिस्टम का ज्ञान भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन ए वेरी प्रोफाउंड मैनर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो लव है, उनका जो स्पिरिचुअल लव है, दैट इज़ नॉट dependent on any fear or any harm that might be caused in the mortal world. So the fourth paragraph starts with a very beautiful line, guys, which goes something like this: dull sublunary lovers love whose soul is sense cannot admit. यहाँ पे sublunary का मतलब है belonging to this world as contrasted with a better or more spiritual one. तो ऐसा एक प्यार जो टोटली कॉन्ट्रास्ट करता है स्पिरिचुअल लव से. सो बेसिकली द ऑथर हियर और द पोएट हियर इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे हिज लव एज द स्पिरिचुअल वन, एंड द अदर्स
with having as the physical one, the physical love. ठीक है, तो जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द फिजिकल नीड्स, वो इस बात को एडमिट नहीं कर सकते हैं. किस बात को एडमिट नहीं कर सकते? एब्सेंस, बिकॉज इट डॉट रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट. तो जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं फॉर द ग्रेटिफिकेशन और द सेटिस्फैक्शन ऑफ द फिजिकल नीड्स, वो अपने पार्टनर का एब्सेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज द एक्चुअली द बाइंडिंग फोर्स विच कीप्स देम टुगेदर, द फिजिकल नीड. तो ऑथर यहाँ पे काफ़ी कॉन्ट्रास्टली बोल रहे हैं कि मतलब उनका जो प्यार है दैट इज स्पिरिचुअल वन एंड दैट इज डिवॉइड ऑफ एनी फिजिकल नीड्स. सो इट्स एक्सप्रेस्ड इन ए वेरी ब्यूटिफुल मैनर. और जो फिफ्थ पैराग्राफ है दैट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ हिज एंटायर कन्विक्शन हियर. द कन्विक्शन, जिस कन्विक्शन से वो बोल रहे हैं कि उनका लव स्पिरिचुअल है, तो हम लोग फिफ्थ पैराग्राफ को भी देख लेते हैं. बट वी बाय ए लव सो मच रिफाइंड, कि उनका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्योर हो चुका है, बिकॉज इट्स ए स्पिरिचुअल लव. ठीक है, दैट आवर सेल्व्स नो वट नॉट वट इट इज़, कि उनको खुद ही नहीं पता कि कितने लेवल तक वो प्योर हो चुका है, और दैट इज डिवॉइड ऑफ एनी फिजिकल नीड्स, इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, अपने दिमाग पे निर्भर कर रहा है, और केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस. वो लोग जो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर कि उनका जो प्यार है दैट इज डिवॉइड ऑफ एनी फिजिकल नीड्स विच इन्वॉल्व्स eyes, lips, hands. Basically, the fifth paragraph cements the author's claim of his love to evolve to a different level where he is devoid of any physical needs, and the spirituality of the love gives the essence and the beauty and reflects the entire significance of their relationship in a very dramatic way. So we have to give some credit here to the author here, John Donne, जिन्होंने अपने प्यार को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है. Our two souls therefore which are one, therefore I must go, endure not yet a bridge but an expansion, like gold to airy thinness beat. तो यहाँ पे जो पहला लाइन है our two souls therefore which are one, इसका मतलब ये है guys that the author John Donne is trying to say that the two souls of the two person, his wife Anne and himself, is actually one. एक ही आत्मा है उनका, दो शरीर और एक आत्मा. ठीक है, दो आई मस्ट गो एंड्योर नॉट येट, वो बोल रहे हैं कि उनको जाना पड़ेगा फॉर दिस ट्रिप टू द कॉन्टिनेंटल यूरोप, एंड उनको इस बात को एंड्योर कर लेना है एज कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दैट इज अ स्पिरिचुअल लव विच कैन एक्चुअली एंड्योर द सेपरेशन, बर्दाश्त कर सकते हैं सेपरेशन को, बिकॉज दैट इज अ स्पिरिचुअल लव. एंड्योर नॉट एट अ ब्रिज, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंट यहाँ पे कि जब वो सेपरेट हो जाएंगे, जब जॉन डॉन ट्रिप में चले जाएंगे, तो ये एक रिलेशनशिप में ब्रीच नहीं होगा, एक खालीपन नहीं होगा, बट एन एक्सपेंशन, बल्कि उनका प्यार जो है और ज़्यादा फैल जाएगा. ठीक है, लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट. अभी हम लोग को पता है कि गोल्ड इज़ ए मेटल विथ ए हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका भी रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है. जो पॉइंट है इज़ वेरी ब्यूटीफुल ट्राइंग टू इज एक्सप्रेस हिज नॉलेज ऑफ साइंस एज वेल, जहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे गोल्ड को विच पर्टिकुलर मेटल विच इज़ हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको जैसे कि बीट करने से वो फैलता है, वो टूटता नहीं है. ठीक है, तो उसी तरह उनका जो प्यार है वो भी और ज़्यादा फैल जाएगा व्हेन जॉन डॉन विल लीव हिज वाइफ. So the next question is very important from the examination point of view, because this is exactly the same question which was asked in the last year June 2019 term and examination, which goes something like this: if they be two, they are two so, as stiff twine compasses are two. Thy soul, the fixed foot, makes no show to move, but doth if the other do. तो हम लोग इसको और डिटेल्स में समझेंगे इस पैराग्राफ को आफ्टर एनालाइजिंग द एंटायर पोएम लाइन बाय लाइन, in order to understand that how to present this type of question or this question in particular in the exam. So as for now, let us try to understand this poem, this paragraph line by line. तो जो पहले के दो लाइन्स है, it says if they be two, they are two so, as stiff twine compasses are two. Here the author or the poet John Donne is trying to compare himself and his wife Anne with the two legs of the compasses.
तो हम लोग को सब लोगों ने कॉम्पस देखा है गाइस. Compasses are basically a mathematical instrument which is used to draw a circle, okay, around a particular center. So the point here, John Donne is trying to compare himself and his wife Anne with the two legs of the your compass. Fine. तो थर्ड लाइन में लिखा गया है, thy soul the fixed foot makes no show. So the point here trying to say that जो fixed foot है, which is like fixated in the point which makes the center actually, he is comparing his wife with the fixed foot of the compass and himself with the moving one. ठीक है, जो सर्कल बनाता है जो लेग, उससे वो खुद को कंपेयर करें, और जो लेग फिक्स्ड है उससे उसको अपने वाइफ को कंपेयर कर रहे हैं. टू मूव बट डॉट इफ द अदर डू. तो ये बोल रहे हैं कि मतलब नो डाउट कि जो फिक्स फुट है वो मूव नहीं करता है, बट जब वो दूसरा लेग मूव होता है देन द leg which is not supposed to move and which actually stays in the same point also moves along the direction of the other leg which is making the circle. इसको समझने की कोशिश कीजिए guys. Actually he is that the leg of the compass is not changing the position. Fine, वो अपने आप ही अपने आसपास ही घूम रहा है and facing towards the compass. So this is a very beautiful interpretation of a mathematical instrument with his spiritual love. ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि they are always connected like the two legs of the compass. The next paragraph is just the extension of the previous one as we have discussed. So it goes something like this, and though it in the center sit. इसका मतलब ये है गाइस कि जो दो लेग है कंपस का, उसमें से एक लेग जो है वो फिक्स रहता है सेंटर में, और उसका कंपैरिजन किया गया है ऑथर या पोइट के वाइफ के साथ, एन के साथ कंपेयर किया गया है, जो सेंटर में ही रहते हैं. ठीक है. येट व्हेन द अदर फॉर डॉट रोम, जो अदर लेग है, दूसरा लेग है कॉम्पस का, वो घूमता रहता है आसपास इन ए वेरी सिमेट्रिकल फैशन. तो उनका उस लेग का कंपैरिजन किया है पोइट ने विथ हिमसेल्फ. It leans and hearkens after it and grows erect as that comes home. So what is happening here is that you can see the exact symmetry of a compass. Is what is happening is the one leg which is like fixated in the center is actually leaning towards the one which is creating the circle. So he and his wife are being compared with the two legs of the compass as how they lean towards each other in a very spiritual fashion, in a very spiritual manner. And eventually when the other leg comes close, जो दूसरा लेग जब क्लोज आता है, जब हम लोग उस कॉम्पस को बंद करने की कोशिश करते हैं, देन द इट गोज इरेक्ट. ठीक है, वो पूरा इरेक्ट हो जाता है. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन विच द पोएट इज ट्राइंग टू डू हियर. एंड this part and this paragraph is also to be taken very seriously guys, because ये एक एक्सटेंशन है प्रीवियस पैराग्राफ का, और जो ऑलरेडी पिछले साल पूछा जा चुका है. So coming to the last paragraph guys, which goes something like this: such wilt thou be to me who must. तो यहाँ पे पोएट जो है जॉन डॉन ही इज ट्राइंग टू से कि जैसे कॉम्पस का फिक्स्ड लेग होता है जो सेंटर बनाता है, एग्जैक्टली वो उसी तरह है उनके लाइफ में. हु इज़ a fixed point in his life, a fixed pole who he can hold on to, like the other foot obliquely run. तो जो दूसरा लेग है जो रैंडमली इर्चे तिरछे घूमता रहता है, ही इज कंपेयरिंग दैट लेग विथ हिमसेल्फ. दाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट. सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दाई फर्मनेस का मतलब होता है कि जिस तरह से वो लेग जो सेंटर बनाता है वो फर्मली खड़ा रहता है, और उसी की वजह से वो सर्कल ठीक से बन पाता है, उसी के लॉयल्टी की वजह से. ओके, सो द फर्मनेस, दाई फर्मनेस मीन्स योर फर्मनेस, और योर लॉयल्टी इज सच दैट makes the circle of the entire circle of the other leg very prominent and very good. Okay, and makes me end where I begun. तो पॉइंट ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपलॉड कर रहे हैं एक्चुअली. ही इज ट्राइंग टू अपलॉड हिज वाइफ फॉर हर लॉयल्टी एंड सेइंग दैट इट्स बिकॉज ऑफ हर लॉयल्टी ही एंड्स अप कमिंग बैक टू हर अगेन एंड अगेन, and also it helps him to be being loyal to her in return. So as promised, let us talk about the June 2019 term and examination question, RTC question, reference to context question that was asked from the same poem, A Valediction, Forbidding Mourning. So the paragraph that was asked was, if they be two, they are two so, as stiff twin compasses are two. Thy soul, the fixed foot, makes no show to move but dot if the other do. So as I've mentioned before that
whenever the RTC questions are asked reference to questions, basically British poetry जो है guys, आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर का भी आप पैटर्न देखोगे तो almost all the questions were from reference to context. This makes this subject a very difficult one to approach to, because ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा पैराग्राफ किस पोएम से उठाया गया है. But again, as I mentioned, you have to look for the keywords here, because obviously the word compass is given here, so we have to directly connect this entire paragraph with the one which we have just done now, a valediction by John Donne. So यहाँ पे हम लोग इस आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, as we have discussed several times before. So reference, context and comment. In the reference part, you will be writing that these lines have been taken from A Valediction Forbidding Mourning, which is a metaphysical poem by John Donne. So this will do in the reference part, as mentioned several times guys, कि अगर आप आंसर को 3 पार्ट में लिखोगे, especially the reference to context one, then this will make your answer more presentable and more approachable, and you will be able to impress the examiner in the process. So coming to the context part, you can actually little bit discuss about the entire plot, or like what the poet here is trying to convey in his entire poem. So the context part should record how the poet John Donne is trying to reflect through his poem A Valediction Forbidding Mourning the spirituality of his love, and he's trying to console his wife here, saying that the separation that they will be having, because the poet is going for a trip, is not permanent one, and their relationship will endure this separation for some time, because the relationship is devoid of all the physical needs that the mortal world is so dependent upon. Fine. So the third part of the answer is the comment part, where you are supposed to discuss the entire paragraph in a very discrete manner, in a very systematic manner, and summarize it in your own words. So we always recommended to discuss a little bit about the plot and summary of the poem as well. That will get you a leverage to score more marks guys, because remember this question is asked for around 10 marks, and you're supposed to be around like more than 100 words in your answers, because again, make sure that you don't use irrelevant things and irrelevant subject plops to twist the answer or go out of track. Just make sure you stay in line and put the words accordingly and present your answer in a very systematic manner. So this is the video guys. Hope you have understood the entire plot and summary of the poem A Valediction Forbidden Mourning by John Donne. In case you have any other doubts regarding this poem or any other poem of British poetry MEG 1 paper, then do feel free to comment below your doubts. We'll definitely try to cover them up. And also do consider subscribing this channel and liking this channel and forwarding this video to your friends, so that they can also reap the benefit of the video in the last minute, because we all know that we have hardly 1 month left for the exams, and it's a very tight time now guys. It's actually a time to revise all of the stuffs that you have been working on since the last semester or the last year. So stay put, stay safe, stay at home, and God bless you, and thank you all.